हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा वीवो y83 का टूटा हुआ कांच किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि वीवो y83 को बिना खोले इसका ग्लास कैसे चेंज करेंगे, और वो भी ओसी मशीन के ज़रिए। और दोस्तों हमारी YMG मशीन हो गई है ख़राब। आज मैं एक दूसरी मशीन पे इसका ग्लास चेंज करके दिखाऊंगा आप सभी लोगों को, जो हमारी पहली मशीन थी। तो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि आप लिक्विड कौन सा यूज़ करते हो। तो दोस्तों मैं एक तो तारपीन का तेल यूज़ करता हूँ, और एक फ्लेक्सो के नाम से आता है लिक्विड, और एक केटी के नाम से ग्लू रिमूवर आता है। मैं ये तीनों लिक्विड यूज़ करता हूँ अपनी सभी वीडियो में। और दोस्तों अगर आप चाहो तो मैं लिक्विड पे एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो मैं बना दूँगा उस टॉपिक पे वीडियो।